on regression. Okay, yes, Avni, we have talked about correlation. Now we are talking about regression. Now, what does regression say? Okay, okay. Ambeshwari, good afternoon. Anuj, Hitesh, Nancy, Anushka, Priyanka, very good afternoon to all of you. Let us try to understand. We understood in correlation that when we have two variables, we would like to see what the relation is there, whether or not there is a relation, and if there is a relation, what is the depth of that relation. Okay, now in regression analysis, what we are doing is we are saying that regression analysis is a set of statistical processes for estimating the relationship between a dependent variable and one or more independent variables. Okay, it simply means we are calculating one variable when the other variable is given. Okay, so if you like want to remember, if you're getting confused in what is correlation and what is regression, so in regression one value is given and we are calculating the other value. Okay, मतलब मोटा मोटा याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. तो उसमें क्या हो जाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उस हिसाब से हम लोग करते हैं. तो उसका एस्टिमेटिंग, ये जो वर्ड है ना एस्टिमेटिंग, माने हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं. Data driven decisions. So regression analysis is a way of mathematically sorting out which of those variables does indeed have an impact. Okay, so you have like continuing with the example of marks. So how much marks you get in a particular exam has so many factors. Now, what we have to do is you have to look through all the factors and decide which are the factors which have the most impact on our marks. Okay, so that is the simplest example. In industry also, like in case of manufacturing, where like we are trying to deduce what is impacting, or we are trying to reduce the cost of a particular material or goods that I am manufacturing. So what I will do is try to find out what are the factors which have an impact on the cost of that product, and then we are going to find out which of them is more important. Okay, because you always remember there is always a cost time benefit analysis. Okay, so how much time you spend and how much money you spend in reducing the cost should also give you in terms of benefits. You know, you should be able to reduce your cost, you should be able to improve your profit. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज को कम करने के लिए मैं उससे ज्यादा खर्चा कर दूं उस चीज को कम करने के लिए. ठीक है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. तो मुझे कौन से फैक्टर्स है जो उस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, उस कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से मुझे उसके बारे में सोचना है. ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस इज अ वे ऑफ मैथमेटिकली सॉर्टिंग आउट. सॉर्ट करना मतलब हम उसको ऑर्डर में लगाएंगे, out of which of those variables does indeed have an impact. It answers the question which factors matters most, hmm? Which can be ignored. Okay, कई जो छोटी छोटी फैक्टर्स है उसको हम इग्नोर भी कर सकते. How do these factors interact with each other and what is the certainty volatility of that factor? इन सब के बारे में हम सोच के करते हैं. हम जब सोचते हैं ना, अरे ये ऐसे कैसे इम्पैक्ट करता है किसी चीज को, तो उसमें इतने सारे लेयर्स होते हैं. वी आर गोइंग थ्रू ऑल दोस लेयर्स. वी आर नॉट ओनली सीइंग which are the factors that impact, then we will see which are the factors which impact the most, which are the factors which are not critical, which we can easily ignore. Okay, obviously they will have an impact, but still we are okay with those. Okay, so we are going to concentrate on energies. Like we have that ABC analysis. Similarly, which are the factors which are affecting our product most? We're going to take those. Then we're going to try to ignore those factors which are impacting less. Then in these factors also, we want to see what is the interplay between these factors. वो आपस में कैसे impact करते हैं. और उसके बाद once there is a certainty, find the certainty and volatility of those factors individually also. उससे क्या हो जाता है, you will have a dependent variable, the main factors that you're trying to understand or predict, and then you have your independent variables, the factors you think can have an impact on the dependent variable. So हम
फिर हमारे पास वो फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। तो वो जो होते हैं ना, जो फैक्टर से मेरा कॉस्ट में फर्क पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, सपोज एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई या जीएसटी बढ़ गया, तो उस समय जो इम्पैक्ट रहता है, तो वो जो वो है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और उससे इफेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट होता है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, हेल्प्स मॉडल द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन देम। Suppose you are a salesman trying to predict next month's numbers. Let's say you find out the average monthly rainfall for the past 3 years as well. Then you plot all the information on a chart that looks like this. हाँ? आपका जो प्रोडक्ट है वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, सपोज आप सेल्स पर्सन है, तो जैसे ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा रेनफॉल का चार्ट है। Like suppose I'm selling raincoats or selling umbrellas. So if this is the chart, so what will happen? I will try to draw a line between these points and this line, which so that the number of points above and the number of points below the lines are nearly same. This is called is then the regression line. Okay, so it will give you the impact on the sale of umbrellas. So as my rainfall is increasing, as my rainfall is increasing, what is happening to my sale of umbrellas? It is increasing. ज्यादा बारिश आएगी तो मेरे ज्यादा छतरी मैं बेच सकूंगी, ज्यादा रेनकोट मैं बेच सकूंगी। तो ये उसका इम्पैक्ट, हम इस तरह से जो हमारे पास डेटा है, जो मेरा सेल्स का डेटा है, वो अगर मैं प्लॉट करती हूँ तो उसके उसमें मैं अगर रिग्रेशन लाइन बनाती हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मैं प्रिडिक्ट कर पाती हूँ कि अगर अगर इतनी बारिश होगी तो मेरे कितने छतरी बेच सकूंगी मैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज होता है ना, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ एक दो, तो आपको अप्रिशिएट हो जाएगा कि इसको ऐसे है। गुड आफ्टरनून तांबेश्वरी, अनुज, हितेश, नैन्सी, अनुष्का, प्रियंका, सौम्या, श्री, गुड आफ्टरनून, अशिनका, वृत्ति, भारती, गुड आफ्टरनून, संगीता कुमारी, साक्षी, रेणुका, गुड आफ्टरनून, Nishi, if I get the time, I will definitely do it. Okay. Balaji, good afternoon. Sunil Kumar, good afternoon. Muskan, Sania, very good afternoon. Okay. So देखिए इस तरह से आपका इम्पैक्ट हो सकता है। सो एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर द पीरियड, बार चार्ट इन ब्लू। ओके, ये वाला बार चार्ट है ना, आपने किया शुरू में। Then air temperature for the period. So all these, these are the types of this you see. Yes, good afternoon, Anamika. And you can see best example to see all this is Indian Meteorological Department. So ये वाला जो गवर्नमेंट के वेबसाइट है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जैसे प्रिडिक्ट होता है ना, बारिश आएगी, कितनी आएगी, जो रेड अलर्ट्स और वो होते हैं, वो सब इस तरह से अनॉमली टाइम सीरीज ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो इस टाइप के आपको ना वहाँ डेली रेनफॉल मैप मिलेगा, टेम्परेचर, क्यूमुलेटिव, अनॉमली, all these, you can see a lot of here information that you can see. You can use your correlation regression over there. Yeah. Mahi, good afternoon. Hmm? Then rolling correlation coefficients between precipitation index and CPI, food and vegetable inflation index. So ये जो है, एक जो रेड वाली है प्रेसिपिटेशन इंडेक्स एंड सीपीआई ऑफ वेजिटेबल, और दूसरी है फूड का है, ग्रीन जो है फूड का है। तो आप देख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 or 6 years हाउ इट इज मूविंग। ओके, हाउ द प्रेसिपिटेशन इंडेक्स इज मूविंग vis-a-vis the food and the vegetable index. Okay, so most of the time it is in sync. Over here you can see this is the anomaly. ओके, तो फिर ये अनोमली स्टडी करते कि ऐसा क्यों हो गया कि जो वेजिटेबल इंडेक्स है वो बढ़ गया, लेकिन जो फूड इंडेक्स है वो नीचे आ गया। तो दिस अनोमली स्टडीड एंड देन द रीजंस आर
tried to be found out. Okay, so even CS can have very good job opportunities in statistical departments, if like provided you like those areas. Okay, now let us go to the actual portion that we have. So equation of y on x. Okay, it's a simple thing. Y is equal to a plus b. Y is equal to, like in the chapter on equations, you learn y is equal to mx plus c. What does m stands for? It stands for the slope. And what does c stands for? It stands for the intersection, right? Remember that? So you had this chart. Suppose I have maybe like this, then this is y is equal to mx plus c. Okay, where m is the slope. Okay, and how do you represent slope? ठीक है ना, ऐसे करके ये स्लोप निकालते हैं, और c क्या होता है? इंटरसेक्ट होता है. ओके, सो c इज द पॉइंट, लाइक यहाँ पे ये वाला है, दिस इज c, द पॉइंट एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस. ओके, नाउ what do we have here is in regression is y is equal to a plus bx. Okay, so you have, how do I find, so how do I solve? So for that, you need to find a and you need to find b. जो questions आएंगे उसमें you need to find a and you need to find b. What is a? How to find a? A is nothing but a is equal to y bar minus b x bar. What is x bar and y bar? X bar, y bar are means. Okay. Now we'll see what is b. B is a minus summation x into summation y. This whole thing is divided by n summation x square minus summation x the whole square. Okay. Now this, जब x नीचे होता है, एक याद रखना है आपको, when, it's very important, when x is in the denominator, b is by x. x जो है वो बाद में आएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा ना अल्फाबेट, वो नीचे आएगा, वो बाद में आएगा. ओके, सो यू हैव दिस, you can see this is also a formula for a is equal to y bar minus bx bar, और you can even, कभी कभी क्या हो जाता है, समेशन दिया रहता है, तो आप डायरेक्टली ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, a is equal to summation y minus b summation x upon n. Okay, now what is b? B is equal to n summation xy minus summation x into summation y upon n summation x square minus summation x the whole square. Okay, so this is one formula and this is 1a 1b. Okay, ये a के फॉर्मूला है और b का फॉर्मूला ये रहा. ठीक है, I hope you've understood till now. Just put it in the chat box. This is just the simplest thing that we are starting with. Regression analysis includes several variations such as linear, multiple linear, and non-linear. So in correlation, if you remember, we were finding the correlation of the linear only, but regression you can use it for मतलब जो मेथड हमने स्टडी किया है वो हमने लीनियर वाले का स्टडी किया है. रिग्रेशन यू कैन हैव यूज इट फॉर नॉन लीनियर. मोस्ट कॉमन मॉडल इज द सिंपल लीनियर एंड द मल्टीपल लीनियर. सो अपने सिलेबस में सिंपल लीनियर एंड मल्टीपल लीनियर है. उसमें से पहला हमने पढ़ लिया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ए एंड बी आर रिग्रेशन पैरामीटर्स. ठीक है, तो उसको इस तरह से भी लिखते हैं. तो क्या करना है, हमें मालूम है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ठीक है, हम समेशन करेंगे. वी आर गोइंग टू ये एक वैल्यू देगा, फिर दूसरा वैल्यू देगा y का, जैसे जैसे x बदलेगा y के वैल्यूज बदलेंगे ना, तो उसको बोलते हैं समेशन y इज इक्वल टू a इंटू
n। कितनी बार, क्योंकि हम कितनी बार y ऐड करेंगे, y1 y2 y3 y4 अप टू कब तक करेंगे, yn। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक से बढ़ा देती हूँ मैं, वो आपको ये नहीं है उसका डेरिवेशन नहीं है, इक्वल टू n इंटू a प्लस b समेशन x। ओके, so this is the first one. And in the second one, what we do is to this equation I multiply with x. To this equation I multiply with x. ये वाला जो इक्वेशन है ना, उसको मैं x से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन x समेशन एक्स वाई। ये वाला जो इक्वेशन है उसको ये कर दिया। अभी दिस इज इक्वल टू ए समेशन एक्स, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, मेरे पास एन नहीं है, मैं वन है ना, तो उसको मैं ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये वाला जो इक्वेशन है उसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एक्स इंटू वाई is equal to a into summation x plus b into summation x square. So these are the two equations that also we use. And when I solve this equation, I get the regression coefficient as b is equal to covariance of xy upon sigma x square. And I can write, the formula for covariance. You know the formula for covariance, so I substitute that formula and I get b is equal to r sigma x into sigma y upon sigma x square. So one will get cancelled and I'm left with is b is equal to r sigma y upon sigma x. Okay. So we start with y is equal to a plus bx. Doing summation, I get summation y is equal to n into a plus b summation x. Now, if I multiply by x and then do the summation, it will be summation xy plus a, equal to a summation x plus b summation x square. Solving this, I get b is equal to r summation x summation y upon summation y upon summation x. It is also is equal to covariance of xy upon sigma x square. Okay. So we have these equations. मोहम्मद इम्पोर्टेंट नहीं समझा, क्या है इम्पोर्टेंट नहीं समझा? हाँ, मतलब देखो कभी क्या पूछते हैं वो आपको, बी एक्स वाई पूछेंगे, दूसरे कलर से लिखती हूँ। सीधे में ये जो x बाद में लिखा है क्यों, क्योंकि ये x जो है वो डिनोमिनेटर में है। वही आप अगर b एक्स वाई करेंगे तो न्यूमरेटर तो है वैसा ही रहेगा, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y, लेकिन यहाँ पे जो है ना डिनोमिनेटर में आ जाएगा n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y द होल स्क्वायर। समझा? इसीलिए when x is in the denominator, b is by(x), मतलब ये जो है ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये by(x) है, ये bxy है। ठीक है, अवनी अंडरस्टूड? हाँ सानिया, लर्न करना होगा फॉर्मूला, लेकिन आप जितना, मतलब मैं तो हर बार आपको ये बोलती हूँ, आप सम्स रेगुलरली प्रैक्टिस करो, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले टाइम जब आप सम सॉल्व कर रहे हैं, आप वो फॉर्मूला लिखिए, आप 5 बार लिखेंगे ना, आपको अपने आप से याद हो जाएगा।
लेकिन क्या हो जाता है, हम बस फॉर्मूला देखते हैं नोटबुक में, बुक में, और हम सिर्फ कैलकुलेटर पे करते हैं। उससे क्या हो जाता है, हमारे पास वो रिदम नहीं मेंटेन होती। बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो वाली बात आपको अपने आप से बाद में आ जाएगी। पहले ना बहुत सारे लोग आपको पहले बताएंगे अरे डायरेक्टली करो, डायरेक्टली करो, लेकिन ये बड़े बड़े फॉर्मूले हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो आपको पहले लिखने पड़ेंगे ना, आपको याद तो हो तो आप कैलकुलेटर पे करोगे ना। हितेश, यस अंडरस्टूड। आमनी अंडरस्टूड। हाँ मोहम्मद, आई होप यू अंडरस्टूड। रेणुका, yes, okay. So this is what we have done, and we said the regression coefficient is r by ba, sigma y by sigma x is equal to covariance xy upon sigma x square. Yes, crystal clear, Mohammed. Now this standard form and normal forms of the equation. ये वाला हमने किया. Now this is also written like this. So what we are writing is y is equal to a plus bx. Then we are writing y minus y bar upon sigma y. ये y है, इस डिनोमिनेटर में भी y है, is equal to r into x minus x bar upon sigma x. Okay. This is also another way of writing. And most important thing, इस पे बहुत फॉर्मूले आते हैं. That coefficient square, coefficient of correlation square is equal to multiplication of the regression coefficients byx into bxy. Okay. ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाले मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन उन्होंने दी रहेगी उस हिसाब से करना पड़ेगा आपको। फिर ये हो गया समेशन y इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b समेशन x। देन यू हैव समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। So, and these are the usual ones, covariance xy upon sigma x square and r into sigma x, sigma y upon sigma x square. ये थ्योरी वाला इम्पोर्टेंट है। Minimization of the vertical distances. So what it means is that you should draw a line between the points such that when you add these differences, जैसे यहाँ पे point है और ये मेरी line है, ये जो distance है ना यहाँ से यहाँ तक, इन सबको जब मैं ऐड करती हूँ तो वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसी लाइन ड्रॉ करो कि आपके जो डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल पॉइंट्स फ्रॉम दैट लाइन इज मिनिमम। So the regression line of y on x can be derived by minimization of the vertical distances between the observed data points and the predicted values. ये observed है और ये predicted है। ये observed है, ये predicted है। ये वाला जो है फिगर 17.7 बुक में से है। ठीक है, लाइक अगर आप चाहें दिस पॉइंट, okay, you're considering this point, so this is my observed point and this is my the calculated point. Okay, so this distance should be like this is the distance, then this point to this point, this will be again a distance, and I will add them up, and then this to this again, this will be a negative distance, positive distance, and I add them all and that should be minimum. Okay, now the formula which will give you, which you will be using to solve the sum. Regression equation of y on x and regression. Okay. Now the how this regression differs from correlation is in this way, that here you have two lines. Okay. You don't know whether x is the dependent variable or y is the dependent variable. So what way I do is,
I'm going to show you both of these. Okay. So this is the regression equation of y on x. y on x माने क्या हो जाएगा, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यहाँ पे x जो है वो डिपेंडेंट होगा. ओके, ये इस तरह से आप लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं. सो व्हाट इज गिविंग मी, this is saying y is equal to a plus bx. Okay, this is y minus y bar is equal to bx byx x minus x bar. Okay, y minus y bar is equal to byx x minus x bar. So how much is byx? Byx is r into sigma y. Sorry, byx is equal to r sigma y upon sigma x. Okay, you can also write it as this way, byx. Yeah, y कहाँ से आ गया? Let me write it again. So this is byx is equal to, so byx is equal to covariance xy upon sigma x square, which is also equal to r into sigma y upon sigma x. Okay, so if I want to find the regression equation of y on x, y minus y bar is equal to byx x minus x bar, or you have y is equal to a plus bx, then you also have byx is equal to r sigma y upon sigma x. Byx is also equal to covariance xy upon sigma x square. Okay, and r into sigma y upon sigma x. Now, same thing applies for x and y also. Only difference is you will get a y in the denominator. पॉइंट नंबर 2 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्रिस्टल क्लियर. क्या हुआ मोहम्मद, कोई बात नहीं. So see, y minus y bar upon sigma y is equal to r x minus x bar upon sigma x. Okay, yes, very good, Anuj. So more sums we do now, the more clarity you will get over here. Now, regression analysis, as we've already seen, is concerned with the establishing a functional relationship. So it establishes functional relationship between two variables and using this relationship for making future projections. मतलब आपको x की वैल्यू दी होगी और y निकालना होगा या vice versa. You'll be given the value of y and asked to find the value of x. This can be applied unlike correlation to any type of relationship, linear as well as curvilinear. The two lines of regression coincide, becomes identical. Okay. Now this is again important from the point of theory first. When with the lines, so you know there are two lines. There are two lines, y on x and x on y. So I have these two lines. When will they become, when will they coincide? When will they coincide? When r is equal to -1 or r is equal to +1. Okay. So two regression lines. Two regression lines will be perpendicular when r is equal to 0. Okay, so this is important from the theory point of visual sum. Find the two regression lines. Okay, so what is one? Y on x and second is x on y. दोनों पूछे जाएंगे नहीं एक टाइम में x equal to how much, and for the second one y is equal to 15, x is equal to how much. Okay, so this is the sum. This is the hint. What should you do? 1, 2, 3, 4, 5. You must find these 5 things. Okay.
Find summation x, find summation y, find summation xy, find summation x square, and find summation y square. Okay. Simple logic. See, x 2, 4, 5, 5, 8, 10. Y 6, 7, 9, 10, 12, 12. Okay. So you can see these two are there. Now I want to find out the value of y when I treat x as the independent variable, and then I want to find the value of x when y is treated as independent. Okay. So I'll just drawn it over here in form of the chart. Okay. ये 5 चीजें आपको करनी है. Yes, Anush, they are perpendicular when r is equal to 0. Now, can anybody tell me the value of summation x, then summation y, x into y, 2 into 6, 2 into 6, which is equal to 12, 4 into 7, 28, 45, 50, 96, 1 to 0. Okay. Now I must find square. 2 square, 4. 4 square, 16. 5 square, 25. Then again 25. Then 64 and 100. Y square is 6 square, 36. 7 square, 49. 8 square, 9 square, 81. 10 square, 100. 12 square, 144. And then 144. I must find summation x, I must find summation y, I must find summation xy, I must find summation x square, and I must find summation y square. Can anybody give me the values? I'm just saying this is 34, then 56, 351. Yes. Anybody else with the answer? राजेश कुमार, टोटली नहीं आ सकता. आपको क्या होगा, ये वैल्यूज दिए रहेंगे. और वैसे वाले सम हम करने वाले, ये वैल्यूज दिए होंगे और आपको कैलकुलेट करना होगा. इसीलिए मैंने पहले ही बोला ना, ये वाला सम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा है, ना कि ये पूरा सम ऐसा कैसा आएगा एग्जाम में. ओके. सो यू हैव टू जस्ट नो एवरीथिंग. व्हेन आई एम सेइंग समेशन एक्स, तो क्या होता है, तो आई मस्ट नो दैट. दैट इज व्हाई इट इज गिवन. Priyanka 34, 56, 351, x square. Anuj is saying is 234. And y square, Sania is saying is 554. Okay, let me just check the answers. 34, 56, 351, 234, 554. Okay. Okay. Now, what is the formula for B? Okay. B y x is equal to n summation xy minus summation x into summation y upon n summation x square minus summation x the whole square. Now, if I have all this, can't I find the value of byx? N is how much? कितने हैं? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 summation xy is how much? 351. 6 into 351 minus summation x is 36 and 54. 34 and 56. Minus 34 into 56 upon 6 into summation x square is how much? 234. 6 into 234 minus summation x 34 the whole square. Okay.
we will be continuously doing. So we have just started. So there is no point in summarizing anything. We're just talking about the formula right now. We will be doing the theories, MCQs also. That time I am going to revise again. Okay, Shri? Ashinka, yes. Summation is this. Renuka, Priyanka, Ashinka, Hitesh. Yes, Anuj, NS6. Renuka is again correct. Okay, so now can we solve for this, and then we are going to solve and we are going to get b by x to be equal to 0.8145. Now I know that a is equal to y bar minus b x bar. Okay. Now I know this. Now can I find y bar? Y bar is how much? Summation y upon n. Summation y is how much? 56 is equal to 56 upon 6, which is equal to 9.33. X bar is equal to how much? Summation x upon n, which is equal to 34 upon 6, which is equal to 5.40, 5.6 something. Okay. So now can I find a bar? Sorry. Then I have I have y bar is equal to 56 upon 6, x bar to be equal to 34 upon 6, and I have a to be equal to y bar minus b x bar. Y bar is how much? 56 upon 6 minus b is how much? B I calculate is 0.8145, and x bar is how much? 5.6. Now can I solve this? I can write it as 34 upon 6. Let me on my calculator. Zero 0.8145 into 34 is how much? 27 minus 56, 28 divided by 6, 28. This is equal to, the final answer is 4.71. 4.71. Okay. Now I can easily find this because I know y is equal to how much? Y is equal to a plus bx. A is how much? 4.71. B is how much? 0.8145 into x. So this is your equation, y on x. Now similarly, you must calculate for x on y. Okay. Now what is the value of x? When x is equal to 13, when x is equal to 13, instead of x, you're going to write 13 and solve. You will get y to be equal to 15.298. Okay. This is y on x. Now x on y. X on y. So when I solve this, now here it is by bxy is equal to n summation xy minus summation x into summation y, this common, n summation y square minus summation y the whole square
and this is going to give me the value of B to be equal to 1.0745. ठीक है? And now can I get a value of A? A is equal, for that I need X bar and Y bar. Okay. Summation X upon N and Y bar is equal to summation Y upon N. ये आपको पहले हमने अभी सॉल्व किया है, वहां से मिल जाएगा 9.56 34/6. Okay, and this will give me A to be equal to 5.67 minus 1.0745 into 9.33. Okay. So once I get this value, this is equal to minus 4.355. I have this. I can write down the value. So what will be my equation? X is equal to. What will be my equation? X is equal to A plus BX. So A is how much? So X is equal to minus 4.355 plus B is 1.0745 into Y. Okay, this is the equation. Now when Y is equal to 15, X is equal to how much? X will be equal to minus 4.355 plus 1.0745 into Y. Y is how much? 15. So I can solve this and I get the value 11.762. Okay. N means what? N means the number of observations we have. So here what do we have? कितने observations है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये पेयर में आते हैं ना, तो ये 6 और वो 6 नहीं है. अगर मैं 2 बोलूंगी तो उसके साथ ये 6 आएगा ही. ये पेयर होता है. तो कितने पेयर्स है? 6 पेयर्स हैं. अनुज, yes, Sri, it's clear now. Avni, Nancy, yes, correct. मुस्कान, मैंने पहले कितनी बार बता रही हूँ मैं कि ऐसा डायरेक्ट सम नहीं आएगा, आपको फिगर्स दी रहेंगी और आपको आना है. ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व करना है अपने को. इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया कि कैलकुलेटर लेके सारे कॉलम्स को ऐड करी, क्योंकि मुझे मालूम है हमें किस तरह से इसको डील करना है. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ऐसे वाले सम किस तरह से आते हैं? चलो मुस्कान आपको दिखा देते हैं. एक्स बार इज गिवन टू मी एज 5.67, वाई बार इज गिवन टू मी एज 9.33. जो अभी हमने ऊपर से कैलकुलेट किया ना, तो आपको इस तरह का डायरेक्ट सम दिया रहेगा. कोवेरियंस एक्स वाई आपको निकालना पड़ेगा समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार. ओके. तो आपको एक्स बार है, आपके पास वाई बार है, ये हो गया समेशन एक्स वाई जो है आपका कॉलम से आता है 351. एन कितना आता है? 6 माइनस एक्स बार कितना आया आपका? 5.67 एंड 9.33. इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5.5989. ओके, ये हो गया कोवेरियंस.
So once I have the covariance, I can find Byx is equal to covariance xy upon sigma x. Yeah. Covariance is 5.5989 and this is equal to how much? Sigma x is how much? Sigma x is 6.85. इस तरह से आपको दिया रहेगा. This is just I'm trying to tell you with an example. We are going to do actual sums, so you'll come to know. Okay, so this is the main thing, that the main formula that you should remember. Okay. So let us revise firstly. Covariance xy, these are the formula you already know. Covariance xy is equal to summation x minus x bar into y minus y bar upon n. When I simplify this, this is equal to summation xy upon n minus x bar y bar. What is the value of A? A is equal to y bar minus b x bar. What is the standard deviation? Sigma x is equal to square root of summation of square root of variance, which is equal to summation x minus x bar the whole square upon n, which can be simplified as summation x square upon n minus x bar whole square. Okay, and similarly sigma y is equal to summation y minus y bar whole square upon n, which is equal to sigma y square upon n minus y bar square. So you have the b, you have a, and then you have the simplified version. Okay. Harish, most of the formula have been covered. मोहम्मद, ये 351 कहाँ से आया? बताइए आप. ये लिखा है ना आपने, समेशन एक्स वाई इज 351, है ना? ये जो आपने कैलकुलेट किया है वहां से आया. कामेश्वरी, इतना स्टेप्स समझाएंगे तो हमें जो है ना, हमारे जो एक्चुअल में सम्स आते हैं एग्जाम में, उसको हमारे पास टाइम नहीं रहेगा. तो वो ये वाला कॉम्प्रिहेंसिव सम है, वो आप लोग करके देखिएगा. उसका वैल्यू आर 0.97 आनी चाहिए. ये इक्वेशन आनी चाहिए y इज इक्वल टू दिस एंड यू शुड गेट एन आंसर. इस तरह का चार्ट बनाइए और करके देखिए. ठीक है. ओके, these are the types of sums that you can get. Mean of shares of company A and B are 44 and 58. Okay, so company A, so what we are going to do is, we are saying mean of share price of company A, I represent as X bar. क्या हो रहा है? And mean of share price of company B, B equal to Y bar. ठीक है. Means of share price of company A and B are 44 and 58. So X bar is how much? 44. Y bar is how much? 58. And the standard deviation is 5.6 and 6.3 respectively. So how much is sigma x? Sigma x is 5.60. Sigma y is equal to 6.30. Okay. The coefficient of correlation R is given to be 0.48.
Find the share price of A when share price of B is 60 and share price of B when share price of A is 60. So I've already given you the hint, use R and standard deviations to find the value of B. Because I can't use the covariance because I will have difficulty in trying to write them down. Okay. See now what happens here is I have shown this to you in the graph form so that it becomes easier for you to understand. Okay. We find the values, you plug in it over here and you will be able to solve it. Now b by x. What is the formula for b by x? R sigma. ये जो y है ना, जो पहला आता है ना वो ऊपर आता है, तो r sigma y upon sigma x. Now r is given to me is how much? 0.58, I think. 0.48. 0.48. Sigma y is how much? 6.3, 5.6 into 6.3 upon 5.60. And when I solve this, how much am I getting? 0.48 into 6.3 divided by 5, 6, 5.6. 0.54. ये आ गया आपका. This is equal to 0.54. Okay. Here what am I doing? Y is equal to a plus bx wala format I'm trying to find out. Okay. So I found the value of b. Now I need to find the value of a. So a is what? Y bar minus b x bar. Y bar is how much? 58 minus b. B is how much? 0.54 into a is how much? 44. Y bar is here, x bar is here, and I need to find this and I need to solve this. How much is this? 0.54 into 44 minus 50. 34.24. 34.24. So I have the value of B, I have the value of A. Okay. I have the value of B, I have the value of A. All I need to do is now is write the equation. So equation will be y is equal to how much is this? 34.24 minus 0.5054 into x. This is the equation of y on x. Okay. Same thing we are going to do x on y. So what will I have be x on y? It will be r sigma x upon sigma y. How much is r? R is given to me as 0.48. How much is sigma x? Sigma x is given to me as 5.6. And this is equal to 6.3. Okay, how much is this giving me? This is giving me equal to 0.4267 bxy. Okay, and I will find a bar as y bar minus bx bar. Y bar is how much? 58 minus b. B is how much? 0.4267. X bar is how much? 44. When I solve this, I get a value of 19.25. Okay. So once I have this 19.25, now I have the equation
what will the equation be? X is equal to, how much is A? 19.25 plus Bx, B by X is how much? 0.4267. Okay. So this is equal to minus 0.4267 into value of B, value of Y then will be 58. Okay. They've asked, na? 58 कहाँ से आया? Find the share price of A when share price of B is 60 and the share price of B and when the share price of A is 50. Oh, it is 50. 50 होना चाहिए, 58 नहीं होना चाहिए फिर. Let me check. What is the value? 0.24267 into 58 minus 19.25, 5 point. ये how much is my B? B is 4267. Why have I taken this? 0 कहाँ से है? 2 कहाँ से है? 1 minute. This 2 is not there. Only 4267. That's why I'm said I'm not getting the answer. 19.25 A bar is 58 minus 0.4267 into 44, 19.25. Now I have to just write the equation. Okay. Y is equal to, X is equal to, we have written Y is equal to here. Now we have to just write X is equal to. Okay. This is the equation of Y on X. Now I must write X on Y. So X is equal to, how much is this? 19.25. Okay. How much is this? Is B is 0.42. Okay. B is 0.42. So what will I have? Plus 0.4267 and Y. Okay, so this is X on Y and that is Y on X. Why is the minus sign here? Plus. So I will just write it here. Y is equal to 34.24 plus 0.54 into X. Okay, so this is the equation of Y on X and this is the equation of X on Y. Okay. Now you've got both the equations. Now you're going to solve this for this. Find the value of A when share price of B is 60 and the share price of B when A is 50. Okay, so when X is equal to 50, Y will be equal to how much? Y is equal to 34.24 plus 0.54 into 50. And if I solve this, I get the value as equal to rupees 61.24. When Y is equal to 60, X is equal to 19.25 plus 0.4267 into Y, that is into 60. When I solve this, I will get rupees 44.85. Okay. So, so I will just repeat this. आपको जब ऐसे सम आते हैं जहां पे आपको मीन दिया है और आपको ये दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, तो आप क्या कर सकते हो? एक तो डायरेक्टली दिया रहेगा मीन या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. समेशन एक्स दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, उस टाइप का. यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने पहले आपको बता दिया कितना है. मीन दे दिया एक्स का, मीन दे दिया वाई का, स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया एक्स का, स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया वाई का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दे दिया आपको. तो आपके पास डिविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो इसका मतलब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं. रिपीटिंग,
when x bar is given, y bar is given, you have got standard deviation of x, standard deviation y, and you have the correlation coefficient r, then you can easily find the regression coefficients. Which are the regression coefficients? A and B. Okay. Again, here there is a little complication because you must find b y on x also and b x on y also. So that is why we have made those two columns. Okay. So see, you could do it this way or you could even directly do it here. ये आपको इस तरह से पसंद है करिए या आप इस तरह से. R कितना है मेरे पास? 0.5848. So this is 0.48. Sigma y is how much? 6.3 upon 5.6. Okay. जिनको नीचे नहीं समझ में आया आप यहाँ से भी कर सकते हैं. और b x y is how much? 0.48 into 5.6 upon 6.3. Okay. A is equal to y bar. Y bar is how much? 58 minus byx. अब अभी ये वाला कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ मैं आपको. 0.48 into 6.3 divided by 5.6. How much is this? 0.54. ये आ गया आपका 0.54. What will happen over here? 0.48 into 5.6 divided by 6.3 आ गया आपका 0.43. 0.4267. Okay. So I have these values. I can write A is equal to y bar, that is 58, minus b by x. What is b by x? 0.54. 0.54 into x bar. X bar is how much? 44. So let me solve it for you. 58. Oh, not 58. How much is this? 0.54 into 44 minus 58. ये आ गया 34.24. This is equal to 34.24. Okay. Then I have this is equal to x bar. X bar is 44 minus bxy. Bxy is how much? 0.4267. And y bar is how much? 58. Okay. Now let me calculate. 0.4267 star 58 for 24.74 minus 44 आता है 19.25. ओके. आपके पास ए बार आ गया, ए आ गया, बी वाई एक्स है, बी एक्स वाई है. आपको दोनों इक्वेशन आप लिख सकते हैं. इज दैट ट्रू? राइट. सो आई हैव दिस वैल्यूज, आई हैव दिस वैल्यूज. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई? एक्स ऑन वाई विल बी इक्वल टू 19.25 minus b plus bxy is how much? Plus 0.4267 into y. Okay, and what will be x, y on x? Y on x will be equal to y is equal to 34.24 plus 0.54 into x. Okay, so ये आपके एक इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है. See, so if you are comfortable with this chart, use this chart. If you are comfortable with writing like this, do it. I know it may look very lengthy. It is not lengthy because I'm writing down each and every step. That is why it is becoming lengthy. If you just use the calculator, see, if you make this chart now, initially also while practicing, you will be very clear. You will not make any mistakes. Okay, because आप वहां ऊपर फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद उसमें कौन से फिगर्स डाल रहे हैं वो लिख रहे हैं और उसका फाइनल आंसर निकाल रहे हैं. तो इससे क्या हो जाता है, आपने कहीं पे भी गलती की है ना, तो आपको तुरंत कौन से स्टेप में गलती की है वो भी आप आराम से निकालते हैं. इज इट क्लियर?
Yes, Tambeshwari. Nancy has got it correct. Excellent, Anuj. हाँ मोहम्मद वो 58 है. किया है ना 58. 61. Nishi, which one? 19.22. What is your doubt, Mohammed? माइनस करके 39 आ रहा है. कौन सा वाला 39? 58 minus this thing. Just let me check. 44 into 0.4267. Okay. Okay. See, I'm calculating for here. This is x bar minus b. Okay. This is for a. Okay. A is this. Now this is a cap. A cap is x bar minus b y bar. Y bar is 44 minus 0.4267 into y bar is 58. Okay. That is why the answer was not matching, and this should give you 19.25. Okay. This is A. 58 minus 54 into 44, and A bar, A cap is equal to x bar minus b y bar. Okay. Hope Mohammed that's clarified. Nishi, समझ में आ गया? हाँ हितेश, सब क्वेश्चंस इसी में आएंगे. यस अशिनका, यस. This is for y on x and this is for x on y. See, that is why, instead of this, I find this chart very easy, because then you don't make a mistake, because already you have written down the formula on top, and then it becomes easier for you to solve. Okay. Okay, these are the types of sums that you can get. Okay. हाँ अब 19.25 आ रहा है ना हितेश? Very good. Mohammed, correct? Yeah, now you understood. Nishi, you've understood? Okay, so let us go in for a short break and come back, because after the break we will try to do as many sums as possible, but I'm concentrating on the theory also, like I promised in the correlation period also, that we are going to do the theory sums together. Okay, so soon after the break I will take the theory questions first very quickly, and then we can get back to the solving the sums. These are the type of sums that you can get. Okay, like you can see on the screen, you will be given this question. The only hitch over here is you must find which is y on x, which equation is y on x, and which is on x on y. That is the only critical point. If you can find that, you will have no problems at all. Okay, let us go in for a break. Break le le.
Welcome back. Okay, Riddhi. Sorry, I was calling you all this while with your father's name. So it is Riddhi. Shri, there is no formula book that I have. You have to prepare your own formula book. Like you must prepare a notebook where you write down all your formulas in your own handwriting. Okay, so it becomes easier for you to remember. And then you have this photogenic memory where, while you're trying to recall, you will recall see, when you try to remember the formula, if it is in few pages, it becomes easier for you to remember, recollect. Okay. If you're trying to recollect the whole study material, it becomes very difficult. So once you've written it in the formula notebook, just those 50, 30, 40 pages, you just have to, every day you're looking through them when you get up, when you're going to bed. So it becomes easier. Okay. Okay, Nishi. It's okay. Your calculations were wrong instead of this. Yeah, that's okay. That's okay. Yes, Ashinka. Yeah. So quickly, as fast as possible, I'd like to finish with the theory questions because we have a lot to cover in the problems also. Okay. Now, bivariate data. I've already marked the answer so that I will quickly just give you the thought or the logic behind it. Bivariate are the data. So bi means two. So two variables at the same. Now see two variables. A, C and D. All three have two variables. Two variable irrespective of time. अगर मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने आज किसी चीज को मेजर किया और उसके बाद लाइक टुडे इज 15th March 24 and then another thing I record on 15th March 28, they will not have any significance because in correlation regression what we are trying is we are trying to see how the dependent variable moves up or down as my independent variable moves. हमें ये देखना है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो ऊपर जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी ऊपर जाता है तो हम क्या बोलते हैं आर इज पॉजिटिव when my independent variable goes up but when my dependent goes down I say r is negative. Okay, so irrespective of time to hai nahi. So a is all more than two variables. When I'm saying by, it means two, so B option is not there. Two variables at same point of time and at different point of time. So same point of time जिस वक्त independent variable change हो रहा है उसी वक्त dependent variable में क्या फर्क हो रहा है. Okay, that's what I'm trying to tell you because that is the main reason some of us don't do well in maths is because we are not paying to the words in my options. Then for a bivariate frequency having P plus Q classification means P rows and Q columns, the total number of cells is अगर मेरा 2/3 है तो ये कितना होता है मेरे 2 रोज है ये x1 है ये x2 है और मेरा क्या हो जाएगा ये y1 y2 और y3. ओके, तो कितने डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 मतलब क्या हो गया ये 2 into 3 ये 6 हो गया. सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है P into Q. So you have to be careful. So P plus Q classification is P rows and Q columns. Sum of the cell frequency in a bivariate frequency table may be negative हो सकती है कि frequency हो ही नहीं सकती. This is impossible. Zero हो सकती है हाँ. ए और बी लिखा है ए और बी भी नहीं हो सकता है नन ऑफ दीज तो है ही नहीं ये करेक्ट है. पर P इंटू क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल जो हम लोग जैसे बनाते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2. What is marginal, what is conditional? Please see the earlier video of correlation. Okay. For P into Q classification, the maximum number of conditional distribution is given by P plus Q. Okay. Now correlation analysis aims at correlation क्या करना चाहता है predicting one value for a given value of the other variable, establishing relation between the two variables, measuring the extent of relation,
both A and B. See, what does correlation do? What does correlation do? It tries to find whether there is a relation, correlation. It tries to find whether there is a relation and what is the extent of that relation. तो प्रिडिक्टिंग जो वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू, ये क्या होता है? ये रिग्रेशन होता है, ये कोरिलेशन नहीं होता. ये पूछ क्या रहा है? कोरिलेशन. So B, establishing relation, yes, this is correct. Measuring the extent, this is also correct. So D is the correct answer. Okay, regression analysis. Now they're asking about regression. Regression is concerned with what? Establishing a mathematical relationship? Yes, correct. Measuring the extent of association? ये measuring जो है ये correlation का है, क्योंकि ये एक्सटेंट के बारे में बात कर रहे हैं. रिग्रेशन क्या करता है? आपको एक वैल्यू देता है. सो प्रिडिक्टिंग द वैल्यू, यस. So establishing a relationship and predicting the value. Establishing a mathematical relationship, है ना, जो हम इक्वेशन बना रहे हैं ना, y on x, x on y, वो a पार्ट है. और जब y दिया है तो x की वैल्यू निकालनी है, उसको हम बोलते हैं predicting the value. तो predict करना मतलब हम उसके बारे में बात कर सकें. So both A and C. Yes, Anush, 6D. अर्शिन का सिर्फ इसमें से आएंगे ऐसा नहीं है, इस टाइप के आएंगे. उसमें आपका वर्ड्स बदले जा सकते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी पूछ सकते हैं ना. आप सीए कोर्स कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो दिया है बुक में उतना ही आएगा. लेकिन ये आप अच्छे से कर लोगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट आता है, आपको ये इस तरह के आंसर करने आते हैं, तो आप क्या करोगे? जो ऑप्शन है वो अच्छे से पढ़ोगे. वाई यू शुड डू दिस इज बिकॉज once you know what are the small things that you should look for, while trying to solve the MCQ on theory. What is spurious relationship? When you have two or more variables and then you see a casual relationship which is not casual, then we say, for example, what the example we can take is like in the summers, you can see on the beach many people drown. Okay, so in summers, or let us say not even summers, like say let us say Goa. In Goa, suppose many people drown on the beach, but ice cream, okay, also increases. See, in not summers, like Goa, you can go in December, say. In December, near the New Year, what will happen? The beach drowning will also increase, and the sale of ice creams also increases. Okay, so we are taking this example. So what happens is, are they related? आइसक्रीम खाना और किसी मतलब डूब के मरना, इसमें कोई रिलेशन है क्या? नहीं. सो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं स्प्यूरियस रिलेशनशिप, वेयर देर यू कैन सी अ रिलेशनशिप. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? It is a bad relationship between two variables. It is very low correlation between two variables. It is a correlation between two variables having no causal relation. It is a negative correlation. So ये जो casual word है ना, वो spurious से है, तो 8 का C है. Scatter diagram. Scatter diagram is considered for measuring linear relationship between two variables, curvilinear relationship between two variables, neither A or nor B, both A और B. So इससे जो है, once I draw this graph ना, हमने किया था ना, yeah, you may even have like this. So what is it giving? It is giving the relationship between the two variables. It may be linear or curvilinear. Okay. Yes, very good. Yes, no causal relation. So what is the answer for the 10th? If the plotted points in a scatter graph lie from upper left, huh? This I always tell you to please pay attention.
अपर, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मेरे, और ये मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है। सो अपर लेफ्ट, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स अपर लेफ्ट टू लोअर राइट इस तरह से आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। कोई चीज जब छोटी है, एक्स छोटा है तो वाई बड़ा है, और यहाँ पे एक्स बड़ा है और वाई छोटा है ना। ये जो है यहाँ वाई छोटा है और यहाँ जो है वाई बड़ा है, तो बड़े से छोटा हो रहा है, वाई की वैल्यू बड़े से छोटी हो रही है, तो वह नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। If in the plotted points in a scatter diagram of evenly distributed, then the correlation is zero. इस तरह से होता है ना अगर, so these are evenly distributed, so the correlation is zero. If all the plotted points in a scatter diagram lie on a single line, then the correlation is perfectly positive or perfectly negative. अगर आपके सारे पॉइंट्स इस तरह जा रहे हैं, आपके सारे जो पॉइंट्स है ना एक स्ट्रेट लाइन में हैं, और यू हैव समथिंग लाइक दिस, they are lying on a single line. So if all the plotted points in a scatter diagram lie on a single line, then the correlation is perfectly positive, yes. Perfectly negative, yes. Both A and B, and neither A and B. So it can be either of this. Okay, they're lying on a single line. It can be either of this. Next is, हाँ, आइदर हो सकता है, ठीक है अनुज, बिल्कुल सही। देन व्हाट आर वी डूइंग? सी एक्चुअली दिस इज योर 12th क्वेश्चन। ओके, यहाँ दो 11 आ गए हैं, वही मैं सोचू ऐसे क्यों हो रहा है। See, this is your 11th question. 12th question, D is the correct answer. हाँ, this is what I have already drawn this for you. Both नहीं होगा, either होगा। इसमें क्या है, this is very important for you to remember. बोथ नहीं है, आइदर हो सकता है, आइदर यू हैव अ पॉजिटिव रिलेशन और अ नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव, इट विल नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। हाँ, ठीक है। Mahi, you have to do questions like this. Don't think about what you did in your 11th and 12th, okay? Because those were questions which each question was carrying 5 marks, 10 marks, na? Long questions. यहाँ पे you have to be more alert. You should be on your toes with respect to the concepts, okay? See, like here, you both A and B and either A or B. Okay, these are the small words you should pay attention to. Actually speaking, see, it is perfectly positive also and it can be perfectly negative also. लेकिन and मतलब उस तरह से नहीं है, एक तो ये होगा या वो होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसीलिए डी जो है वो प्रेफर्ड है, इसीलिए मैंने उसको पहले से मार्क नहीं करके रखा, इसी वजह से। 13, द कोरिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस। जूते का साइज और आप कितने बुद्धिमान है उसमें कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, तो इसीलिए जीरो है। देन द कोरिलेशन, यस माय, आई हैव टेकन योर क्वेरी।
The correlation between speed of an automobile and the distance traveled by it is negative. Okay. So because when you are the when you see why it is negative is after applying the brakes. This is important. ऐसे कैसे होता है? If my speed is more, the distance traveled is more. For a normal, when the car is moving, if you increase the speed, what will happen? You will be able to cover more distance in the same amount of time. But once you apply the brake, what will happen? Your speed will come down, but your distance is still going to go up. Okay, so that is why it is a negative. So because of the words after applying the brakes, it has been the case. Okay, this is also an important one. Now scatter diagram helps us to find the nature of the correlation between two variables, compute the extent of correlation. See, scatter diagram से हमको देख के क्या पता लगता है correlation है कि नहीं, है ना? कंप्यूट कर सकते हैं क्या उसको देख के? नहीं. उसके बाद हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसलिए वहां कंप्यूटेशन नहीं. ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशन बोथ ए एंड सी हो सकता है क्या? Do you obtain a mathematical relation just looking at a graph? No. Okay. For that you need to use the Carl Pearson formula. So that is why A. इसीलिए मैं बोल रही हूँ तीन जो है तीनों ठीक है, लेकिन ए जो है वो बिल्कुल सही बैठता है. Pearson's correlation coefficient is used for finding correlation of any type, correlation of linear. ठीक है, ये आपको बस मालूम होना चाहिए. पियर्सन जो है वो सिर्फ लीनियर के लिए यूज कर सकते हैं. प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन, फाइंडिंग द अमाउंट. हाँ, आपका ये जो फॉर्मूला है उसे ये भी पता लगता है कि आपके पास कोरिलेशन है कि नहीं, और वो उसका नेचर है पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे पता लगता है. इसीलिए वो बोथ है, बोथ है. 17 में वो बोथ है. उधर क्या था? आइदर ए और बी था, इधर दोनों बोथ ए एंड बी है. यस अनुज, इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द nature of correlation and also finding the amount. Why? Because the product moment correlation coefficient is going to throw a value at you. If the value of correlation coefficient is positive, then the points in the scatter diagram tend to. वहां क्या किया था? उन्होंने बताया था कि आपका जो ग्राफ है लेफ्ट से राइट कैसे मूव कर रहा है. अब यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो आपको पूछ रहे हैं कि ग्राफ कैसे जाएगा. तो मेरा पॉजिटिव है माना, अगर मेरे को याद भी नहीं रहता ना, मैं तुरंत ड्रॉ करके देख लेती हूँ. ऐसे जाएगा ना, पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये क्या है? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट. लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, तो लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ये ए वाला आंसर आ गया. ठीक है. When r is equal to 1, all the points in the scatter diagram would lie. R1 मतलब perfectly positive. R is equal to 1 means implies what? Perfectly positive correlation coefficient. So on a straight line directed from lower left to upper right, ये वाला जो है ना वैसे lower left to upper right. तो 18th और 19th देखिए आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग से बोला हुआ है. 18 में क्या बोला है? इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव, और यहाँ क्या बोला है? आर इज इक्वल टू 1. आर इज इक्वल टू 1 भी तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया ना, इसीलिए. 20th, product moment correlation coefficient may be defined as the ratio of. अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमको मालूम है कैसे डिफाइन होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. जैसे ये आया ना, इतना से वर्ड्स में आ जाता है ना, तो हम तुरंत इसको बाजू में ना हमें फॉर्मूला लिख लेना चाहिए. ओके, तो हमने अगर फॉर्मूला लिख लिया तो हमें यहाँ से पता लग जाता है. प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन of the two variables to the covariance between them. ये क्या है? इससे क्या होता है? ये क्या बता रहा है?
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन टू द कोवेरियंस। ऐसा है क्या ये? नहीं, ये उल्टा हो गया है, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। तो कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वरायंसेस ऑफ देम, ये क्या बोल रहा है? कोवेरियंस एक्स वाई है, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है? सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। ये है क्या? वरायंसेस है क्या? प्रोडक्ट ऑफ वरायंसेस नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, इसीलिए सी करेक्ट आंसर है। The coefficient of correlation between two variables is unit free. ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इट इज यूनिट फ्री। What are the limits of the correlation coefficient? इसमें भी देखिए, ये दो आंसर सेम है नियरली, लेकिन यहाँ क्या वर्ड यूज किया है? एक्सक्लूडिंग, और यहाँ क्या यूज किया है? इंक्लूडिंग। r-1 + 1 हो सकता है क्या? यस, तो इसीलिए r कैन टेक अ +1 and -1 values, so it is including. So 23 is including. In case of correlation coefficient between two variables is 1, the relationship between the two variables would be a plus bx, b greater than or equal to greater than 0. ठीक है? देखिए, ये जो r(a1) है ना, उससे हमें a के बारे में कुछ नहीं पता लगता। सी, ये जो है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे क्या है? कोरिलेशन इज 1, तो इस तरह का ग्राफ नहीं है। मेरा ग्राफ कैसा होगा? How will my graph be? Like this, right? I can have it this way or I can have it this way. So मेरा जो C है ना, जो A है ना, where it is cutting the x axis, वो कहाँ पे भी हो सकता है। तो मेरा A माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। What is most important is B is greater than 1. So B और D में क्या है? ये देखो, ये जो है ये इनकम्प्लीट है। 24th इज इनकम्प्लीट। ए, सी क्या है? बी लेस देन 0 है, व्हेन इट इज इक्वल टू 1, तो ये तो होना ही नहीं है। अब बचा क्या है? बी और डी। बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव। ए के बारे में मैं नहीं बोल सकती, इसीलिए मैं बी सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है? फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स वी कंसिडर एट्रीब्यूट्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। द वर्ड इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मैंने which is describing you. Okay, so these attributes you will use the rank. Attributes, when I want to measure the attributes, I will use the rank. Hmm? Like we are talking about the beauty contest. So how do you, like, it's an attribute, right? You can't say कि, if the eyes are this big, that means it is beautiful, and eyes that is not this big, it will not happen. Okay, so this. माही, आपको समझ रहा है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सोचने हैं, करने हैं, जिसमें आपका माइंड ज्यादा अप्लाई होगा, रादर देन जो 11th-12th में हम लोग करते हैं। फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट वी यूज रैंक कोरिलेशन। ब्यूटी, आई विल यूज रैंक कोरिलेशन। यस अनुज, वेरी गुड। If there is a perfect disagreement between marks in geography and statistics, perfect disagreement between marks of geography and statistics, then what would be the value of rank correlation coefficient? Perfect disagreement implies R is equal to -1.
29th, when we are not concerned with the magnitude of the two variables and the consideration, we consider the coefficient. हमें magnitude नहीं सोचा, हमें सिर्फ देखना है. See, answer is concurrent deviation. Why? Because I just want to see whether or not there is a correlation. Okay, I just want to see that, and I want to like, and because of that I'm not concentrating on the values. I just want to have an overall review of the conditions taking place, conditions under which the operations are taking place that time. So that time I will consider the coefficient of concurrent deviation, because the normal correlation coefficient, Carl Pearson, you require such a lot of calculations, right? यहाँ हमें अगर वी आर नॉट कंसिडर्ड विद द मैग्नीट्यूड, हमें सिर्फ देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नहीं है, तो हम कंकरेंट डिविएशन मेथड यूज करते हैं. व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड? मेथड ऑफ कंकरेंट डिविएशन. बिकॉज हम वहां क्या करते हैं, प्लस माइनस ही कर रहे हैं ना, बड़ा है या कम हुआ है, वहां तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, है ना. हम ये नहीं बोल रहे 35 माइनस 28, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं 35 है तो प्लस लेंगे 28 से, और 28 के नीचे होगा तो माइनस लेंगे. ठीक है, तो इसलिए इट इज द क्विकेस्ट मेथड. यस अनुज, करेक्ट. What are the limits of coefficient of concurrent division? This question has been repeated. Limiting value is inclusive. ये word आना चाहिए. If there are two variables x and y, then the number of regression lines could be. दो variables है, so what are the two regression lines? Y on x and x on y. So there are two. Blood pressure of a person depends on age. Okay, blood pressure and age. So we need to consider what? The regression equation of blood pressure on age, the regression equation of age on blood pressure. This is also very important question, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आपको ये समझ रहा है कि नहीं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं कि रिग्रेशन में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. एज इज डिपेंडेंट ऑन बीपी है क्या? नहीं, बीपी इज डिपेंडेंट ऑन एज. हमने देखते हैं ना, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उन लोगों को ज्यादा बीपी हो जाता है. जब आपके क्लासमेट्स में बहुत हार्डली एक आध बच्चा होगा, भगवान ना करे किसी भी बच्चे को हो, लेकिन अगर होता है तो एक आध दूसरे बच्चे को बीपी की बीमारी होती है, बाकी तो नहीं होता. तो जैसा आपका एज बढ़ेगा वैसा आपका बीपी बढ़ेगा. तो डिपेंडेंट क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. दिस इज बीपी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज इज द इंडिपेंडेंट. ये आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं. अब हर साल एक साल बड़े होने वाले हैं ना, अब उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते. तो एज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बीपी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो यू मस्ट फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बीपी ऑन एज. ऑफ, ऑफ वर्ड है ना, ऑफ के बाद जो वाला आता है ना वो डिपेंडेंट होता है, ऑन जो है उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट आता है. सो 33 का ए है. The difference between the observed value and the residue value, estimated value, is called as A or B. ये सिर्फ नाम है. The error in case of regression can be positive, negative or zero. The regression line of y on x is derived by ये वाला है, minimization of vertical distances, horizontal नहीं. हम वो वाला जो है ना, once I have this is my data I have plotted, I will draw the line. So I'm going to find these distances of the point to the line. I'm not going to find horizontal, vertical distances. So it is important that conditions में मेरे पास lines आती है, r is equal to 1 and r is equal to -1. I hope everybody is understanding these. What are the limits of two regression coefficient? ये अभी हम करने वाले हैं, लेकिन थ्योरी था तो मैंने कहा इसके साथ ले लो. See, what is it? R square is equal to byx into bxy. अब आपको ये तो मालूम है कि जब ये होता है तो आपका जो R है वो R स्क्वायर है. तो इन दोनों की जो R जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ये है byx into bxy. माने क्या होता है?
इन दोनों की जो साइंस है वो सेम होना चाहिए. रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल ऑलवेज हैव द सेम साइंस. आइदर यू विल हैव बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. So product of the regression coefficient must be numerically less than unity. Must be positive, not necessarily. दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. नो लिमिट, ये भी गलत है. वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ये भी गलत है. प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी. ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है कि आर विल लाई बिटवीन -1 टू +1. इस वजह से दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 1 आना चाहिए. द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. ये आपको याद करना पड़ेगा. ये जो है ना, वो हर स्टैटिस्टिक्स में जहां जहां भी आपको दिखता है ना, वो आप एक पेज पे लिख लीजिए. किसमें चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है, किसमें नहीं पड़ता है, किसमें चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, किसमें नहीं पड़ता है. ये आप एक पेज पे लिख के हर रोज उसको देखा करिए, तो आपको याद रह जाएगा. If the coefficient of correlation between two variables is 0.9, then the coefficient of determination is. ये हम कर लेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें. हाँ, ये वाला मुझे देखा बताना है आपको. ये फर्स्ट वाला तो इजी है, हमने वो शायद लास्ट टाइम किया हुआ है. If covariance of xy is 15, what restriction should be put for the standard deviation of x and y? See, what I have is, ठीक है, covariance xy upon sigma x into sigma y. So what, अगर ये मेरा 15 है, मुझे मालूम है मेरा r जो है 1 के ऊपर नहीं हो सकता. My r cannot be greater than 1, so this multiplication should be less than or आई मीन मोर देन, नॉट उसका जो डिवीजन होने के बाद इतना आना चाहिए. इट शुड बी मोर देन 15. तो ही 15 के नीचे अगर 16 आता है तो ही आर मेरा लेस देन और इक्वल टू 1 आता है. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी मोर देन 50. ठीक है, लेस देन 15 नहीं है. शुड बी सम का सवाल नहीं है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है तो सम का तो सवाल ही नहीं है. नो रिस्ट्रिक्शन भी गलत है, सम भी नहीं है. इन दोनों में से बी और सी में मोर देन और लेस देन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और उस ऊपर से एग्जाम टाइम है तो और ज्यादा हो जाता है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट I want to make sure that my R is maximum equal to 1. It should be 1 or less than 1. So when will that happen? When you have the denominator more than 50. This I think we have done. The covariance between two variables is 20 and the variance of one of the variables is 16. What would be the variance of the other variables? See, I have R to be equal to covariance upon sigma x, sigma y. Now what they are saying, covariance is 20 and the variance of 1 is 16. Variance is 16, so sigma is equal to 4. So 4 into, say, sigma y. Now this, so 4 ones are 5s are. So 5 upon sigma y should be less than or equal to 1. 5 upon sigma y should be less than or equal to 1, क्योंकि maximum r की वैल्यू क्या है? 1. So 5 should be less than or equal to sigma y. Now squaring, what will I get? Sigma y square is greater than or equal to 25. स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को. ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट डू आई गेट? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 25. जब ये 25 या उसके ऊपर होगा तो ही मेरा आर जो है वो करेक्ट आएगा. If y is equal to a plus bx, what is the coefficient of correlation between x and y? 1 or -1 accordingly as b is greater than or b is less than 0. ठीक है.
बाकी ये तो अभी हम सम्स कर लेंगे. ओके. Please put it in the chat box whether or not you have understood the theory of both correlation and regression. I've tried to solve as many theory questions as possible because I know that most of you have studied correlation regression in your 11th and 12th. So the sums part is not that difficult, but this some theory problems, the questions, MCQs are there where you have to apply more. Like even in your 11th 12th you had MCQs, but they were very simple, on a simpler level. But now what happens for your CA, because you are in a professional course, so the word twisting will be more. वो शब्दों का खेल उसमें बहुत होगा, तो आपको जो है, आपको कॉन्सेप्ट आपका एकदम स्ट्रांग रख के आपने वो जो शब्दों के खेल में अटकाने की आपको कोशिश करते हैं, वहां से निकल के आपको प्लस मार्क्स लाने हैं. ठीक है, तो हम लोग तुरंत, आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको क्लैरिटी आई कि नहीं आई. All those on YouTube, please please press the like button if you like what you are listening to, and put in the chat box if you understood those concepts. Yes, Ashinka is saying crystal clear. Sakshi is saying thank you. All the concepts are clear. Anuj is saying मैम correlation regression chapter भी अच्छे से crystal clear हो गया. मैम क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू सो मच अनुज. It really helps when you are able to understand what is being taught. That is really very nice. So now I hope you can see the screen now. So let us now go to the solving of the sums. For the variables x and y, the regression equations are given as 7x minus 3y minus 18 is equal to 0 and 4x minus y is minus 11 is equal to 0. Okay. Find the arithmetic mean of x and y. So to find the arithmetic mean, what do I have to do is I have to solve these two equations, simultaneous equations. So 7x minus 3y is equal to 18, and this is 4x minus y is equal to 11. So multiplying the second equation by 3, I get 7x minus 3y is equal to 18, and 12x minus 3y is equal to 33. Subtracting, I get minus 5x is equal to minus 15, right? So I get x is equal to 3. Now putting this value of x in any of the equation, so I have 4x minus y is equal to 11. X कितना आया 3, so 4 into 3 12 minus y is equal to 11. So y is equal to 12 minus 11, y is equal to 1. So what is this giving me? This is giving the value of x bar, y bar. So I have x bar equal to 3, y bar is equal to 1. So this is done. Now identify the regression equation of y on x. ये important है. क्या करना है हमको? एक assume करना होता है कि एक x on y है और एक y on x है. उसके बाद second step क्या है? I have to find the regression coefficient bxy and byx. Third step, I have to multiply those two, bxy and byx, whatever I have found it. And fourth step is I have to find the square root. This square root should be less than or equal to 1. ठीक है? Only then I can say I have done the right thing. So what will I do? What are the steps? So what are the steps? Choose one line as x on y and the other as y on x.
एक ले ली तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैसे हो जाएगी. फाइंड by(x) multiply and use r² is equal to bxy and into by(x). Then fourth, find square root of r². You will get the answer, and this should lie between plus or minus 1. Okay, ऐसा नहीं लिखती, थोड़ा सा दिखने में भी ऑड हो जाता है. So how it should be? It should be -1 square root of r² should lie between -1 and +1. Okay. Now, in the given equation, what are the two equations that I have? Okay, these are the steps. So, 7x minus 3y is equal to 18. Be the equation minus 18 upon 3 plus 7 upon 3x. Okay. So, this is of the form a plus bx. So, this is of the form a plus bx. So, from here I get b yx to be equal to 7 upon 3. ये आ गया मेरा एक. Now, let ये अगर हो गया तो what is the other equation? What is the other equation? 4x minus y is equal to 11. So, let 4x minus y is equal to 11 be equation of x on y. ठीक है, तो क्या होगा, x मैं लेफ्ट में लूंगी और y मैं राइट में ले लूंगी. So that means I am going to do 4x is equal to 11 plus y. X is equal to 11 upon 4 plus 1 upon 4 y. Okay. So this implies b xy is equal to 1 upon 4. So I know r² is equal to byx into bxy. byx कितना है 7/3. bxy कितना है 1/4. This is equal to 7 upon 12. So r will be equal to square root of 7 upon 12. So it can be plus or minus 7 upon 12. 7 divided by 12 is equal to 0.58 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 0.76. So r is equal to 0.76. Okay. So what was the question? Identify the regression equation of y on x. ये सब एकदम सही हो गया ना, r की वैल्यू अच्छे से आ गई, तो y on x कौन सी इक्वेशन है? 7x minus 3y is equal to 18. So this is 7x minus 3y is equal to 18 is the regression equation of y on x. Compute the correlation coefficient between x and y. ये अभी हमने निकाला 0.76. Given the variance of x is 9, find the standard deviation of y. Okay. Variance of x is 9. So, standard deviation of x is how much? 3. Now, what is required? by(x) कितना है? by(x) अभी कैलकुलेट किया हमने 7/3. by(x) is equal to r into sigma y upon sigma x. This is the formula. So by(x) is how much? 7/3.
This is what I calculated just now, isn't it? B by x is 7/3. So B by x is 7/3. R कितना आया? 0.76. सिग्मा y कितना है मालूम नहीं, वो ही ढूंढना है. और सिग्मा x कितना है? 3, है ना? We just calculated this. So this 3 and this 3 will get cancelled. So sigma y will be equal to 7/0.76, which is equal to 7 divided by 0.76 is equal to 9.21. Okay. So I think once you do this sum, you will be able to find all this. Okay. I'll quickly go now. See, again, the same. See, this other equation they will give. You have to assume one equation as x on y and another equation as y on x. Second step, find the value of bxy, byx. Third step, multiply, try to find r square. And then once you find r square, find the square root of r square. If the value of r that you are getting is more than 1, that means your assumption is wrong. You have to do the other way round. Okay. वो r जो है आपका less than 1 आना चाहिए. ठीक है. I'll quickly go through the properties of regression. अरे बाप रे, बहुत लेट हो रहा है आज. Ashinka, crystal clear. Sakshi, thanks. Thank you. Anuj, Nanda. Nanda, I'll just look. Arlene is saying, with your help, my quantitative aptitude becomes very easy. Thank you so much. Okay. I'll just see, Nanda, I'll let you know. Properties is regression coefficient remains unchanged due to shift of origin, but changes due to shift of scale. Okay. These are the theory questions you must know. So you will write u is equal to x minus a upon p and v is equal to y minus c upon q. And then you will be able to find the new, when you have shifted the origin and scale, then you will be able to find the new regression coefficient for the new lines. So P, B, UV and B, VU. The two lines of regression intersect at the point x bar y bar. ये भी एक theory question है. तो coefficient correlation r square is, हाँ ये देखिए, ये जो हम करते हैं ना उसका इंग्लिश में ऐसा आएगा. तो अगर theory question में आएगा आपको आना चाहिए. Because what is r? R is the geometric mean between the multiplication of the regression coefficient. Okay. Coefficient of correlation. This is very important. Okay. Right से करती हूँ मैं. The coefficient of correlation between two variables x and y is the simple geometric mean of the two regression coefficient. यहाँ पे क्या है? Correlation coefficient है. यहाँ पे क्या है? Geometric mean of regression coefficient. The sign of the correlation coefficient would be the common sign of the two regression coefficient. Okay. So ये बहुत important है, ये बहुत important है. So first thing is coefficient of correlation is simply the simple geometric mean of the regression coefficient. Second, the sign of the correlation coefficient will be the sign or same sign as that of the regression coefficient. तो जब हमने को choose करनी होती है ना, दो lines दी है उसमें से कौन सी y on x है और कौन सी x on y है, you have to simply remember always the sign should come the same. बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की साइन सेम होनी चाहिए. दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ऑब्वियसली बिकॉज हम आर स्क्वायर कर रहे हैं ना उसके बाद. तो ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ये आर स्क्वायर निकलेगा, ये दोनों नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव. तो वैसा हो सकता है. ओके. ये मैंने इस तरह से दिया हुआ है तो आप ये वाला एक सम सॉल्व कर लीजिएगा. इसमें ये फॉर्मूला यूज करना है मेरे को. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. सी आई हैव आल्सो गिवन यू. अगर आपको x बार दिया है, y बार दिया है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई दिया है, तो आपको
आराम से उससे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे जहां पे अपना तुरंत आपको फॉर्मूला आता है तो आप निकाल सकते हैं उसको। Okay, just I'll quickly take you to the coefficient of determination also. See, correlation coefficient measures the linear relationship between two variables. A better measurement for this purpose is provided by the square of the correlation coefficient. So, R square. So, R square is equal to explained variance and unexplained variance. मीन्स व्हाट, जब हम ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे पॉइंट्स के साथ, तो ये जो है दिस इज द कैलकुलेटेड लाइन and these are the observed point. So using coefficient of correlation, I can have the variance, that is the shift from the calculated values. There can be an explained value and there can be unexplained reasons. Okay, so the explained upon the unexplained is R square. This is known as coefficient of, this R square is known as coefficient of determination. बहुत इजी हो जाता है। आपको क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 0.48 दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ R स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या, सिर्फ R स्क्वायर है। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या है, उससे भी सिंपल हो गया, वो हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 माइनस आर स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर। आपको आर दिया रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उससे आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ, ये दो बच्चे थे वो मैंने बता दिए। अभी और कुछ है क्या, एनीथिंग एल्स? हाँ अनुज, जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन होगा वही आर का साइन होगा। ओके, आई जस्ट सी। ओके, यस, any other doubt you have, you can always write to the institute. Yes, so that is all from my side. Thank you for being connected with us, and wishing you all the very best. So this completes the portion for mathematics and statistics and logical reasoning. Wish you all the very best for those who are appearing in the month of May. And you study hard. I have already last time given you the tips for it. Okay, thank you so much. Bye Nishi, bye everybody.
and wishing you all a very happy Holi.